बार छक्का। जैसे ही देखा कि लेग स्टंप के बाहर ये छोटी गेंद है और स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से ये करारा प्रहार। और जिस आक्रामक मूड में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टारगेट सेट करके आए हैं। पीछे बहुत झाड़ियां हैं, इस कारण उस एरिया पर नेट लगाया गया है ताकि गेंद खो ना जाए। और उन नेट पर ही गेंद टकराई है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो लगभग 270 के आसपास का स्ट्राइक रेट है इस समय कुशल माला का। बहुत ही आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। इस बार फिर वाइड करार दी जाएगी। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई फायदा वहां होने वाला है नहीं, क्योंकि स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर रखा है। फाइन लेग का फील्डर इतना ज्यादा फाइन है कि वो इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। और अब अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया है गेंदबाज ने। पहले ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द विकेट गए हैं। और ये स्ट्रेट ड्राइव, 2 रन मिला इस बार। जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद है, बैक टू द बॉलर्स खेला। इस ओवर की सबसे अच्छी गेंद थी ये, मिडिल और ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद थी, थोड़ा सा फंस कर आई। और इस पिच को हमने देखा है महिलाओं के टूर्नामेंट में भी कि फंस कर गेंद आती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है तो शॉट खेलना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन अब तक ट्रू बाउंस देखने को मिला है जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, और वही काम किया है कुशल माला ने। फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर खेला है। शॉट में बहुत ज्यादा पावर जेनरेट नहीं कर पाए थे रोहित। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम एक रोचक कीर्तिमान भी है। जनवरी 2019 में रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान पुरुष क्रिकेट में अपने नाम किया था। और जो इनके साथ खेल रहे हैं कुशल माला, उन्होंने 2020 में यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंतिम गेंद फाइन लेग के बाहर, 4 रन मिलेगा और इस चौके के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई है। 9 ओवर के बाद नेपाल 95 पर 2। नौ ओवर के बाद 95 पर 2 नेपाल का स्कोर है। कुशल माला और रोहित पौडेल, जैसा कि हम पिछले ओवर में चर्चा कर रहे थे, अच्छी गेंद थी ये। 2019 में सबसे कम उम्र में पुरुष क्रिकेट में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान बनाया था रोहित ने, और 2020 में उसे तोड़ा कुशल माला ने। पिछले कुछ समय से नेपाल में क्रिकेट की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है और वहां पर काफी कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत ही करारा प्रहार, 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं कुशल माला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, ओवर पिच गेंद थी और आर्क में, और इस गेंद पर बहुत ही शानदार शॉट खेला है। लय में नजर आ रहे हैं। पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं कुशल माला। और एसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जहां पर नेपाल ने क्वालिफाइंग टिकट पाया था एशिया कप का, वहां भी कुशल माला ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीमें भी हैं, वहां नेपाल को अपना प्रभुत्व दिखाना पड़ेगा। इस बार स्क्वायर लेग के बाउंड्री के बाहर 4 रन। पहले छक्का और फिर दंदन आता हुआ ये चौका। आतिशबाजी मैदान पर चलती हुई यहां पर। इस बार छोटी गेंद थी, लेंथ को करेक्ट करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने। खिलाड़ी मौजूद था वहां पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन शॉट में इतनी ज्यादा गति थी कि रोकना बहुत मुश्किल। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार छक्का। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है कुशल माला की तरफ से, और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो गया है।
मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है कुशल माला ने। खराब गेंद, राउंड द विकेट आए थे, बहुत ही ज्यादा खराब गेंद, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। और इस बार ओवर करेक्शन, मार से बचने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइड। ये किसी बुरे सपने की तरह है मंगोलिया के लिए ये मुकाबला। एक और छोटी गेंद, इस बार कवर के ऊपर से मिलेगा चौका। चौके और छक्के की झड़ी लगा दी है कुशल माला ने। शायद सबक सिखाना चाहते हैं यहां पर मंगोलियाई गेंदबाजों को। एक और छोटी गेंद, इस बार ऑफ साइड को एक्सप्लोर करने का मन बनाया, बहुत ज्यादा रूम था। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी था उसके पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर में अब तक 21 रन आ चुके हैं। ऊपर गेंद और इस पर एक और करारा प्रहार, एक और छक्का। कमाल की बल्लेबाजी की है इन्होंने। 10 ओवर की समाप्ति के बाद नेपाल 122 पर 2। Not if you hit it like that. One bounce, 4. And just a little bit of width, just a hint of width. That deep cover. On the leg side. But, so just coming into the ring. Still enough cover though. Not if you hit it like that. One bounce, 4. And just a little bit of width, just a hint of width, which allows the left-hander Marla to free his arms. There's no sweeper on that offside boundary. Gee, I tell you what, he is a clean striker. It's coming up the middle. Pitch playing a little truer than it did yesterday. Yeah, that's going to be 4 wides. I'm not going to catch that one. I'm not sure we're going to really see how the pitch is playing until Nepal have a bowl, because it's just gentle little medium paces here. And now disappearing at a rate of approaching 13 an over now, and it's been a long over. And that one's going to go all the way into the side screen. Well, keep your eyes on the record books. He is on the charge. And, with the same result. Just over the boundary. Is it? No. The umpire's signalling 4. I think there may again be he's just crossed his arms and is waiting. It's right in front of the officials. I think that they may just ask to see this again. Well, that crossing of the arms is basically the indication of, change previous decision. And so he did cross his arms, and now he signals, there it is, change of previous decision, 6. That's a long way over. Well, it certainly was the boundary. And so it was a 6, and this should be another one, a 4. That's a wonderful shot. Yeah, well, we spoke about records. Well, we're going to see one here, an Asian Games record, that's for sure, because they are racing towards that total. 150 comes up. Just laced through extra cover. Sweep is very square. It's been just under an hour of pain for Mongolia. Started off quite tight, but you've got to be able to continue. And that just sat up beautifully to be cut away. Top edge. It's safe behind the keeper. Yeah, get a single, but the problem is it brings Marla back on strike. Good news, bad news. Yeah. And the other thing is, so it's an hour. There's a bit of grace here in the Asian Games, but playing in other tournaments, your over 8 gets scrutinised, and Nepal at number 12 to the hour, which there would be a penalty. Yeah, I think it's a little longer, 75 minutes for the women's innings and 90 for the men's, so a bit longer, but they've already going to have to bowl another 3 overs. Oh, now in the air. Oh, and spilt. And they'll come back for a couple. Well, we've had a spectacular catch in the deep, this time not. Oh, and overthrows. Oh dear, wheels are falling off a little bit. It was, I think that was Munkbat who fancied it. Yeah, he's come storming off that boundary again. Oh no, it was actually Namstraight.
Is it 90 minutes or is it 85 minutes for the men? As I read it, I will check. It's a long time to be given 90 minutes. 15 more minutes than the woman. Nicely played. Just a ball remaining with the 12th. There it is, Marla. He was on 79 from, just 26 deliveries. He's at 7 6s and 5 4s. Just, if you're in the stadium, keep your eyes peeled. Don't go looking at your phone at the moment. He's been outstanding, hasn't he? I don't think he's got the record in his sights, you know what I mean? In other words, I don't think he's looking at it because, it's just not aimless swinging. He's happy to knock away one, and he would have just got 2 the previous time he was on strike, but he ended up getting 3 because of a miss. He's let a few byes go, but generally he's been good. Took a catch. It's 160 for 2 off of 12 overs. Almost 100 partnership. Big appeal. He only has to hit 3 out the ground, and he's got the record. He's appeal for LBW. Just a little bit high. Not the worst shot. We had one, didn't we, earlier on that was on the boots, and that looked actually worth, if you could review it, you'd probably review it. Not available here at the Asian Games. We do have replays for run-outs and stumpings. Okay, another one. Oh, that's a collector's item. Just a tap and run. Get 2. You do get 2, yeah. So the run rate just creeping over 13. Let's see. There's Morgan. We know that he's got to get this absolutely right. And have to borrow it again. Another wide. That's wide number 15. He's going big again. There is a fielder there who will watch it. And I think that's exited the ground. There's a volunteer who's just gone to find that. Definitely a 6. Yeah, being thrown back from the road beyond. And it's on. Here we go. Every time he hits one out the ground, he just threatens it, doesn't it? But you think about it, if he had continued with his power hitting, he could have obliterated the record. That's one to put in your pocket and enjoy for a while. That's cleared the front leg, made some room, and yeah. It was high. It was straight over the keeper, the fielder rather. Sumia watching it over his head. It's gone again. Fielder was interested. Oh, and we run past it. It's 4. Now, 10 off 2. He's put the afterburners on. Well, they won't touch AB de Villiers as fast as ODI 100, but we're in a T20 match. We're in the Asian Games, so this will be the a record. A little bit of backspin defeating the fielder. Here we go again. Not this time. That should just be a single and keep the strike. He'll keep the strike here and give himself an opportunity. The opener has been brought back on. Oh no. Have a word, HK. I can't. I mean, surely you're just swinging for it, yeah. Unless he's going to take it. Probably too frightened to break Rohit Sharma's record. There'll be some strict social media correspondence. Dear sir. Something along those lines. I'll go for a quick single. It's nice to see from Nepal, actually. We've got a lot of big hitting, but we've also got a bit of touch on display and a bit of a puff of dust off the surface as well. Right, hard hats on. Let's see what he can do. There you go, over the boundary, and that is a marvellous, marvellous achievement from Marla. They know it. Yep, they certainly do. There was an indication from the non-striker. Yeah, just trying to find out from the dugout, is that it? Has he got it? Has he got it? There was some thumbs up.
And so not only is it a very well played 100, but it is now officially the fastest T20 international 100. Record breaker, Kushal Mala, take a bow. And he's gone again, and this one's going to go out the ground into the concession stalls. Well, I hope you were paying attention down there by the shopping area. Well, I'm telling you what, this innings will capture the imagination of the locals in attendance, because there's groans when every time the ball now disappears out the ground. This is what T20 cricket is all about. Ball has been retrieved. And the third official with the spare balls is trotting back. Well, that third official with spare balls will be very, very busy throughout this competition. What an amazing achievement. 107 of 34 at a strike rate of over 300. Well, a little bit of running repairs needed, I think, to the seam probably. The ball, of course, sometimes the umpire will always have a little pair of scissors. It's not so badly damaged that they can't carry on. There's a collector's item, a swing and a miss. I wonder what his mindset will be now. 189 for 2. I mean, he's probably just going to keep swinging here, Marla, but I'd be tempted to actually give one of my teammates a hit, to be honest. Well, I think he's just going to give it a go. If the wicket goes, the wicket goes. Just a little push into the leg side. From, in particular, Marla. Bear in mind, Badal is 24 of 13. It's a wide ball. The thing is, how do you feel running into him? Tim Stewart got the treatment. He's gone for 40 in 2 overs. That was a good ball though. Into the block hole, dug out by Mara. Advances to 109. The highest T20 team score is 278 for 3, which was Afghanistan against Ireland. They can hit sixes for fun. The Afghans, I tell you what, for fun. It might be a no ball, but it's certainly a 6. Boundary 6 for Nepal. No, it's a run fest here. Yeah, I think Please avoid the ball. it's probably just falling underneath the hip, but I think there needs to be a little bit of common sense. This score is enormous. It's highly unlikely. No, we don't like to say it so early in the piece, but highly unlikely that Mongolia will get even close to it. It's gone again. It's another maximum, almost identical. Well, this time Padels joining the party. For Nepal. They are getting pummeled now, Mongolia. It's easy on the eye when the ball is disappearing. Not if you're Mongolian, of course, and there's only 11 in the squad. So, no changing of personnel for the next match. This one, no, fielder there. Oh, puts it down in the deep. Obviously, we saw 2 lovely catches for Mongolia's wickets, but now we've seen a couple put down. Again, it's just the positioning. The ball sort of slices off the bat, so it just drifts to the left hand of long off. Samir it was. Didn't get himself in position at all, really. Just parried it away. And a miss. Haven't seen that often against Kushal Mala. 200 is up, by the way. Sorry. It's going so fast, sometimes you look up and think, oh, okay. Oh, Nepal, it's a what a fillip for them. They'll fancy a scalp of a big team, won't they, if they can play like this. Take that one out again. Better over. From Jamal Shurin. I think there's a couple of things that this type of performance can do. It can give you the confidence required, or it can also get you a little bit overconfident, because your opposition is going to change. It's it again. There's only, well, there are 2 players there, but it dissects them. The run was from Lutbaya, but he was never going to make it. Into the other tunnel. We've got 2 tunnels here. Volunteers doing the fielding for us.
Quick shout out to the volunteers who have looked after us very well. Sure, and what about those who've looked after the ground when we had those 2-3 days of rain? On, off came the covers, on, off, and there were, 20 or 30 just bringing the covers on. Tricky game, cricket. I mean, it's only in its infancy stage again. We talk about in the various games around the world, whether it be Asian Games or Olympic Games. It's been the Commonwealth Games, but looking to become a fixture in the Games events. And that's a full toss. Someone there, but it's too big. Another 6. Radal is not just noodling it for a single and letting Mala get on with it. He's going at a run rate of over almost 250, the strike rate rather. If he starts to get a move on, it could be the shortest record of all time. It's gone again. It's a top edge, but goodness me, that has motored. I think that might have gone all the way. Just checking. Just check. It's the wrong end, isn't it, for the umpire? I think you're right, though. Square leg has signalled at 6, and now the umpire does. Yeah, just over. White ball, white. 16 ओवर के बाद नेपाल ने 225 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान रोहित पौडेल 50 पर खेल रहे हैं। एक और शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक और चौका आता हुआ। मंगोलिया की फील्डिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा निराश किया है, और ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है बड़ी टीमों के साथ खेलने की या क्रिकेट खेलने की, क्योंकि बेसिक गलतियां जो हैं वो बहुत खल रही हैं इस समय। मिस जज किया टिप्पा खाने के बाद, थोड़ी सी जैसा कि हिलती है गेंद, और वहां पर चौका, एक और वाइड। बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन आज दिए हैं मंगोलिया के गेंदबाजों ने, और तारीफ करनी पड़ेगी कुशल माला और रोहित पौडेल की। दोनों ने क्या पारी खेली, और कुशल माला 120 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 44 गेंदों का सामना किया है। एक और बड़ा शॉट, क्या इस बार कैच आउट होंगे? जी नहीं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दंदनाता हुआ शानदार छक्का कुशल माला के बल्ले से। स्कोर कहां तक जाएगा? 270, 280 या फिर 300 का भी टारगेट इनके जहन में होगा। कुशल माला ने तो पहली गेंद से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। रोहित पौडेल ने दूसरी तरफ थोड़ा सा समय लिया था, और इस बार छोटी गेंद थी, ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी 2 रन तो कम से कम मिल ही जाने चाहिए। इसके बाद 19 गेंद का खेल बाकी है, 238 रन बन गए हैं। जरूर कोशिश करेंगे कि 280 तो पार करें, और यह भी संभव है कि 300 के लक्ष्य तक भी पहुंच सकती है नेपाल की टीम। एक बार फिर करारा प्रहार और एक और छक्का। मन माफिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां शॉट मारना चाह रहे हैं वहां खेल रहे हैं, और कुशल माला और रोहित पौडेल की जोड़ी टिक गई तो निश्चित तौर पर 300 के आसपास लेकर चले जाएंगे नेपाल को। नेपाल के लिए तो ये बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस हो गई। 22 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से। इस बार कनेक्शन सही आया नहीं है, क्योंकि फ्री हिट है, आउट होंगे नहीं। फ्री हिट पे विकेट जाएगा नहीं। 248 पर 217 के बाद इस बार स्लॉट में गेंद थी, उठाकर खेला है, फील्डर नीचे जरूर है लेकिन कैच छूटा है। वाइड, नो बॉल और कैच छूटने के आंकड़े पर अगर मैच के बाद नजर डालेंगे तो सभी डबल डिजिट में मिलेंगे आपको। इस बार थोड़ा सा कदमों का प्रयोग करके आए थे डीप मिड विकेट के खिलाड़ी, आए जरूर थे नीचे लेकिन जजमेंट सही नहीं। कीपर के ऊपर से गेंद निकली है, टॉपेज लगा था। बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ नेपाल की टीम। कप्तान रोहित पौडेल 53 पर, कुशल माला 135 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर्सनल माइलस्टोन की तरफ भी देख रहे होंगे। T20 क्रिकेट में 150 का आंकड़ा बहुत विजिबल है। बॉलर के ऊपर से कनेक्शन आया नहीं है सही, और एक और मिसफील्ड, 1 रन होता। क्या 2 रन के लिए जाएंगे? जी नहीं। 16 गेंद अब भी बाकी है इस पारी में। फुलर लेंथ की गेंद थी, और मंगोलिया के लिए बहुत कुछ सीखने का अवसर है। जब इस मुकाबले के बाद इसके रीप्ले को देखेंगे तब समझ आएगा कि किन एरियाज में
मेहनत की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। रोहित पौडेल भी कह रहे हैं कि 300 का आंकड़ा अब हमारी आंखों के सामने है और 300 के लक्ष्य तक पहुंचना इस उनके लिए अभ्यास मैच सरीखा। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर हाफ वॉली थी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत शॉट खेला। इस ओवर में अब तक 10 रन आए हैं। दो गेंद बाकी हैं। मिडिल और लेग स्टंप। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। डायरेक्ट हिट लगता तो शायद रोहित पौडेल मुश्किल में आ सकते थे। कुशल माला ने स्टार्ट ही नहीं लिया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस मुकाबले में बहुत समय बाद डॉट गेंद देखने को मिली है। अच्छी गेंद। इस बार रन के लिए गए हैं। विकेट के सामने हाथ लेकर आ गए विकेट कीपर, नहीं तो रन आउट पक्का था। 18 ओवर की समाप्ति हो गई है। नेपाल 259 पर 2। 12 गेंदें बाकी हैं और इस बार विकेट जानी चाहिए। जी हां, विकेट कीपर ने कोई रिस्क नहीं लिया। शॉर्ट पॉइंट लेग पर जो खिलाड़ी मौजूद था उनके पास दस्ताने नहीं थे और हमने देखा है कि कितने ज्यादा आज कैचेस छूटे हैं। तो रोहित पौडेल आउट होकर जा रहे हैं और नेपाल को लगने वाला ये तीसरा झटका। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। और जनाब क्या ये छक्का चौथा होने वाला है? जी हाँ, क्या गजब की बल्लेबाजी और वही स्लॉट पर गेंद भी डाल रहे हैं। गेंद की लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी लाइन पर लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर और कोई परेशानी नहीं हो रही है। एरी को 4 गेंदों पर 4 छक्का जड़ दिया है। ड्रेसिंग रूम में बहुत समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जब बारी आई है तो टूट पड़े हैं मंगोलियन गेंदबाजों पर। और ये लगातार 5वां छक्का। 1 ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्का जड़ दिया है एरी ने। 19 ओवर की समाप्ति हो गई है। नेपाल 291 पर 3। और कुशल माला ने कहा कि मुझे नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर देखने में ही मजा आ रहा है। 1 रन लेकर अपना छोर बदला और एरी को जिम्मेदारी दे दी है। 5 गेंदों पर 30 रन की पारी। 5 गेंद 5 छक्के और 5 के 5 छक्के स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गए हैं। अपनी पारी की शुरुआती 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर इन्होंने एक खास तरह का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। फुल टॉस गेंद थी, एक और छक्का। 6 गेंदों पर 6 छक्का जड़ दिया है अपनी पारी में। बेहतरीन। इसके साथ ही 300 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 300 पर पहुंच गई है नेपाल की टीम और ये छक्का भी ऑन साइड पर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से। रनों की आतिशबाजी यहां पर नेपाल ने पेश की है। क्या इस बार एक और छक्का है? गेंद काफी हवा में गई है, शायद डिस्टेंस नहीं मिलेगा। कैच छूटा है तो छक्कों का जो सिलसिला शुरू किया था पहली गेंद से वो टूट गया है और चेहरे पर मुस्कान। स्लॉट में गेंद जरूर थी लेकिन सर काफी ऊपर चला गया था और जब शॉट खेलते समय आपका सर ऊपर चला जाए आकाश की तरफ तब जो डिस्टेंस है वो मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 रन ले लिए हैं, स्ट्राइक पर हैं और इस बार एक और छक्का जड़ा है। बीच में एक गेंद छक्के के लिए नहीं जा पाई लेकिन जितनी भी गेंदें खेली हैं उसको छोड़कर सबको बाउंड्री के बाहर भेजा है और सभी ऑन साइड पर ही भेजा है।
बेहतरीन। इस बार एक और छक्का, इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर छक्का गया है। Boundary 6 for Nepal. और स्कोरर के लिए भी काफी मुश्किल हो गई है जिस गति से छक्के आ रहे हैं। इस बार अपना इरादा बदला, छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। फुल टॉस बॉल, इस बार डिस्टेंस पर गेंद गई नहीं है, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और 2 रन पूरा भी कर लेंगे। क्या कमाल की पारी खेली है यहाँ पर एरी ने, आकर धुआंधार आक्रामक ताबड़तोड़।